Hello everyone. How many of you are here from yesterday? Okay. We'll just wait a few minutes before starting. Any doubts from yesterday? No, it will be different. So today what we're going to cover is we'll have one group discussion and we'll cover how to crack interviews. Okay, so like whoever of you can turn on your cameras, I would really prefer if some of you can turn on your cameras so we can just see who all are participating. So it is not true. In fact, I would say the vacancies would be more in Delhi NCR compared to others. Only problem is that the candidates also would probably be more, and that is why you were having some difficulty on that front. Okay. Regarding your referrals part, I will be sharing that list of referrals with you today, and वहां से आप लोग पूरा है ना apply कर पाओगे. Okay. Hi Muskan, thank you for joining. Yes, hi Yuganjar, thank you for organizing this event. So all of you would probably be knowing Muskan already. She is, you can say, a legend for the CA inter students. And if you are on LinkedIn, you would have definitely seen her post. So we'll be, learning from her experience and how she has applied and how she has been able to get into two of the big six firms and what is the general process like. The broad topics we are going to cover today are group discussions and interviews, but then it's open for
open for all kinds of questions, to other kinds of questions too, right? So over to you, Muskan, on your journey, and how did you choose to get into Big Four, and what was the entire process? Yes, sure. So like I would be just reconnecting in just 1 minute. I need to fix this camera and all. So okay, sure. Meanwhile, all of you can put your doubts in chat, and you can make it everyone. So I'm receiving a few doubts which are directed just to me. So if you can send it in everyone mode, then it will be easier. So yes, good morning everyone. I hope like you all enjoyed yesterday's session with Apurva and Muskan Kaushal, and I hope it was great learning with you all. So like you all guys can open your camera. Let us make it interactive session because आप भी यहाँ पर अपना आधा घंटा 30 मिनट लगाने आए हो, तो like let's turn out it to be fruitful from both way communication, because मैं कुछ भी बोल के चली जाऊंगी, ठीक है, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा. So like let's make it more interactive. So I would request you also, if possible, then you all can open your camera. Otherwise, unmute करके सब एक बार hi, hello, you can say. Otherwise, you will think कि तुम लोग खाली join करके छोड़ दिया है. तो because see like hardly मैं मतलब around मैं 30 minutes में पूरा cover कर दूंगी कि what you have to exactly prepare for interview. आप बिग फोर के इंटरव्यू में बैठने से पहले ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, जो भी मैं आज बताने वाली हूँ, ठीक है. तो आई थिंक 30 मिनट ही है यार, ज्यादा टाइम नहीं है. तो लेट्स इंटरेक्ट एंड देन मेक इट मोर फ्रूटफुल सेशन. एंड डजंट मैटर आप लोग कहाँ बैठे हो, गाड़ी में बैठे हो, बेड पे बैठे हो, whatever your dress is, okay, so वो सब you don't care about all those things. So yes, so hi Vanshika, Harsh, Payal, Mohini, Shivansh, Anjali, Divyam, Tanish. I hope my voice is audible to all of you, right? Yes, ma'am. Ma'am. Hello, ma'am. Good morning, ma'am. Yeah, hi Vanshika. Good morning. Yes, hi Anshul. Good morning, ma'am. Hi Saurabh. So if I talk about so like now let's start the session. So if I talk about myself, so like I am Muskan Agarwal and I am currently working at ENY in statutory audit department. And previously I had also worked with Grant Thornton for 4 months, like in the same department, in the stat audit only. And my experience has been amazing, like in both the firms, in both GT and EY. Like I had enjoyed the work culture and the work. So, and also it's like a, so there was some chat, okay, ठीक है. So it was like for all the big fours and big six या top 20 firms में आपको किसी में भी जाना है, तो like there is a proper format कि किस टाइप से क्या इंटरव्यूज वगैरह होते हैं, ठीक है. तो फर्स्ट आई वुड कवर बिग फोर बिग सिक्स. तो coming straight forward to the topic, so basically there are 4 rounds of interview in every big four and every big six, ठीक है. तो अगर मैं specifically big four का बात करूं तो उसमें 3 से 4 राउंड होते हैं, ठीक है. तो the first round would be your HR round, जहाँ पे HR would be calling you, just like आपसे कुछ personal details पूछेगी, आपके number of attempts पूछेगी. She will ask whether are you ready to relocate or not, एंड शी विल आस्क कि लाइक आप इतना वर्क पैसे झेल लोगे या नहीं. तो वो कुछ नॉर्मल से क्वेश्चंस पूछेगी आपसे, एंड इट विल बी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, ठीक है. दिस विल बी द फर्स्ट राउंड. तो एचआर कॉल पे ही पूछ लेगी 2-3 बेसिक डिटेल्स. तो उसके बाद इफ योर प्रोफाइल इज शॉर्टलिस्टेड, तो फिर देन यू विल गो नेक्स्ट टू दिस टेक्निकल राउंड, राइट. टेक्निकल राउंड में बेसिकली होता क्या है, टेक्निकल राउंड में आपसे आपके सी इंटरमीडिएट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बेसिकली रिलेटेड टू एएस एंड एसएस, ठीक है. एंड बाकी और क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लाइक आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू ऑल, बट पहले मैं एक बार एनेबल कर देता हूं. या सो पहले मैं एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ, फिर आई वुड बी कवरिंग कि आपसे एग्जैक्टली क्या पूछा जा सकता है. तो टेक्निकल क्वेश्चन वुड बी मोर अबाउट के AS2 बता दो क्या है, AS लाइक AS10 में क्या कवर होता है, और एसए AS कारो एंड लाइक शेड्यूल 3. बाकी लिस्ट आई हैव प्रिपेयर्ड, आई वुड बी शेयरिंग विद यू ऑल कि एग्जैक्टली क्या क्या पूछा जा सकता है. देन आफ्टर इट विल कम दैट पार्टनर राउंड. तो पार्टनर राउंड बेसिकली आपका लास्ट राउंड होता है, जिसमें पार्टनर वुड बी कवरिंग लाइक ही कैन आस्क एनीथिंग. अब वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, लाइक व्हाई यू वांट टू जॉइन EY, ठीक है, व्हाई यू वांट टू जॉइन बिग फोर एंड नॉट मिड साइज फर्म, इतना प्रेशर होता है आप कैसे हैंडल करोगे, ठीक है. एंड ही कैन आस्क एनीथिंग लाइक क्यों स्टैट ऑडिट में क्यों जाना है आपको, टैक्स में क्यों नहीं जाना, ठीक है. ही कैन आस्क यू एनीथिंग. तो ये 3 राउंड्स होते हैं.
एंड एक फोर्थ राउंड होता है दैट इज जीडी, दैट इज ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन में होता क्या है, जितने भी सीवी शॉर्टलिस्टेड होते हैं उन सबको लाइक एक प्रॉपर एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे बिठा दिया जाता है एंड यू पीपल डिस्कस अमंग योरसेल्फ किसी भी टॉपिक के बारे में। उसमें बेसिकली आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, ये सब वो टेस्ट करते हैं कि whether the individual will be able to communicate with the client or not। ठीक है, अब जैसे मैं अपनी बात ले लूँ ऑडिट में, तो ऑडिट में मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव टू डील विद द क्लाइंट, राइट। आपको डेटा लेना है क्लाइंट से डिस्कस करना है, अगर कुछ भी डिफरेंसेस आ रहे हैं तो the organizations want a person who can communicate with client easily। ठीक है, तो वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपका कॉन्फिडेंस, आपका लाइक बोलने का टोन क्या है, आपका लाइक पर्सनैलिटी कैसा है, प्रोफेशनल पर्सनैलिटी है या नहीं। तो दीज ऑल पीपल टेस्ट दैट इन ग्रुप डिस्कशन राउंड। ठीक है, सो नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस के एग्जैक्टली आपसे पूछा क्या जा सकता है, लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। एंड ऑल्सो दीज क्वेश्चंस आर लाइक 60% इंक्लूसिव क्वेश्चन, 60% आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। बाकी यार 40% तो कोई भी लाइक गेस नहीं कर सकता, बिकॉज वो कुछ भी पूछ सकते हैं, राइट। इंटरव्यू में कुछ भी पूछेंगे, बट एटलीस्ट दीज क्वेश्चंस आर द मस्ट प्रिपेयर, लाइक ये आपको प्रिपेयर करके जाना ही जाना है एंड ये इनमें से पूछा जाएगा एंड मोस्टली ये पूछे जाते हैं, राइट। सो इफ आई टॉक अबाउट टेक्निकल राउंड, ठीक है, तो टेक्निकल राउंड में एज आई सेड कि ये शीट मैं आपके साथ अभी शेयर कर दूंगी चैट बॉक्स में, तो यू कैन लाइक टेक स्क्रीनशॉट और एनीथिंग यहाँ से, लेट मी जस्ट या यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। टेक्निकल राउंड में बेसिकली आपसे मेजरली वही एएस पूछे जाएंगे, ठीक है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, देन एप्लीकेबिलिटी एंड ओवरव्यू ऑफ इंड एएस, देन जो आपका चैप्टर 9 था, ठीक है, ऑडिटिंग में, तो ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूछ लेंगे, दैट टेल मी 5 प्रोसीजर्स हाउ यू कैन ऑडिट पीपीई और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, हाउ यू कैन ऑडिट कैश एंड बैंक। तो आपको उस एरिया पे भी अपना कमांड होना चाहिए, स्पेसिफिकली जब आप ऑडिट के प्रोफाइल के लिए जा रहे हो, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि वो आपसे पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है, कि लाइक हाउ यू कैन ऑडिट द डिफरेंट आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट। देन इसके बाद आपसे कंपनी ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन recent changes or amendments to schedule 3, caro, then deferred tax is the most important AS and yeah most like mostly आपको हर इंटरव्यू में ये देखने को मिल जाएगा कि आप अगर 4 इंटरव्यू दोगे तो 3 में तो ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना, कि इन एएस सॉरी AS42 AS22 बताओ कि क्या होता है एंड लाइक व्हाट इज AS22 इन ब्रीफ। देन ऑडिट ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये वाला क्वेश्चंस मेजरली आपको जब आप इंटरनल ऑडिट प्रोफाइल के लिए जाओगे तो ये आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एंड CSR अमेंडमेंट्स, देन सेक्शन 248 करके एक है, ये पढ़ लेना, ये मेरे से डिलॉयट के इंटरव्यू में पूछा गया था एंड उसके बाद से मैंने नोटिस किया कि काफी बार पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन। देन बजट के लाइक बजट अभी आया था रिसेंटली, तो इस अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट, तो वो पूछ सकते हैं। कट ऑफ प्रोसीजर, देन SQC1 जो एक होता है स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल करके कुछ है, आई डो नॉट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन बेसिक टर्म्स ऑफ ऑडिट कुछ भी पूछ लेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय मटेरियलिटी, व्हाट डू यू मीन बाय परवेसिव, ठीक है। देन रीसेंट चेंजेस क्या चल रहे हैं, थोड़ा बहुत लाइक वही इन शॉर्ट्स करके एक ऐप आता है जिसमें बहुत ही शॉर्ट और ब्रीफ न्यूज दी जाती है, इकोनॉमिक न्यूज एंड फाइनेंस न्यूज, दैट यू कैन रीड ऐसे ही लाइक क्या चल रहा है, कभी कभी पूछ लेते हैं वो भी। देन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स के आपसे एडजस्टमेंट्स पूछ लेंगे, ठीक है, कि चेक इशूड बट नॉट डिपॉजिटेड, तो इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, दे कैन आस्क दिस। देन बेसिक एडजस्टमेंट्स ऑफ कैश फ्लोज पूछ लेंगे, ठीक है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल वर्सेस टेस्ट ऑफ डिटेल, ऑडिट प्रोसीजर्स ऑफ BRS। तो ये जो मैंने बताया मेजरली स्टैट ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से थे। टैक्स के लिए आई थिंक the person who is in tax, he or she can guide you better, तो उसके लिए you can connect with tax people, but from my perspective I can say अगर आप स्टैट ऑडिट के लिए इतने क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहे हो, like you are good to go in an interview, because सब कुछ क्या पूछा जाएगा ये कोई नहीं बता सकता, बट एटलीस्ट अगर आप इतना भी प्रिपेयर कर रहे हो तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके टेक्निकल हो जाएंगे इन टेक्निकल राउंड, राइट, ठीक है। तो स्टैट ऑडिट के लिए ये है, बाकी टैक्स के लिए यू कैन कनेक्ट विद द कंसर्न पर्सन जो भी टैक्स में हो, he or she can guide you better, ठीक है। आफ्टर दैट जो ये वाले क्वेश्चंस अभी जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ, ये मैं आपकी किसी भी राउंड में वो पूछ सकते हैं, आपके HR राउंड में पूछ सकते हैं, आपने टेक्निकल राउंड में पूछ सकते हैं, आपके पार्टनर राउंड में पूछ सकते हैं, एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच यू शुड प्रिपेयर, ठीक है ना, पॉजिटिवली यू शुड प्रिपेयर। तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये पूछ लेंगे, लाइक टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ठीक है। तो इसका यू हैव टू प्रिपेयर योर आंसर, पहले से ही आपको एडवांस में प्रिपेयर करके रखना है, 2-3 बार भले ही रिवाइज भी कर लेना ताकि वहां पे कोई दिक्कत ना आए, बट ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। देन दे कैन आस्क व्हाई यू चूज CA, ठीक है, व्हाई स्टैट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, डायरेक्ट टैक्स, व्हाटएवर द केस में बी। देन डिफरेंस बिटवीन स्टैट ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक,
ठीक है. Then why we should hire you, what are your strengths and weaknesses, where you see yourself in 5 years, why big 4 big 6, ठीक है. एंड अगेन अगर आप EY का इंटरव्यू दे रहे हो तो वो पूछ लेंगे कि why not Deloitte, ठीक है, why KPMG and like why not this, why KPMG, why not Deloitte, ठीक है, why GT, why not Big Four, ठीक है ना. तो इस टाइप की क्वेश्चंस, क्रॉस क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं कि लाइक अगर आप वीडियो का इंटरव्यू दे रहे हो तो पूछ लेंगे कि why Big Four, why not why video, why not GT और why not Big Four, ठीक है. तो इन सब के आपको पहले से ही प्रिपेयर करके रखने हैं आंसर्स. नाउ हाउ यू कैन प्रिपेयर आंसर्स, तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है. व्हाट यू कैन डू इज, जिस भी कंपनी में आप जा रहे हो, लेट्स सपोज आज आपका डिलॉयट में इंटरव्यू है, तो मेक श्योर कि आप डिलॉयट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के जा रहे हो पहले से. तो आप बेसिकली गूगल कर सकते हो डिलॉयट के बारे में और डिलॉयट का लाइक पढ़ लो कि कहाँ हेडक्वार्टर्स है, कितने एम्प्लॉइज हैं, क्या लोकेशन है, उसका विजन मिशन स्टेटमेंट पढ़ लो, ठीक है, कि डिलॉयट के वैल्यूज और एथिक्स क्या है. तो नो योर कंपनी बिफोर यू आर गोइंग टू इंटरव्यू. अगर आप जीटी में इंटरव्यू देने जा रहे हो तो मेक श्योर यू नो एवरीथिंग अबाउट जीटी, मतलब एटलीस्ट आप 4-5 लाइनें बोल पाओ जीटी के बारे में कि वो करता क्या है, क्या नहीं है, एंड व्हाई यू वांट टू जॉइन जीटी. तो बेसिकली उनके मिशन और विजन स्टेटमेंट्स पढ़ के जाना. एंड यू कैन स्पीक लाइक दिस, क्योंकि आई लाइक द ethics and cultures of GT, like I just coincide with the values followed by Grant Thornton, so I want to join a firm where with polishing my technical knowledge I would be able to also polish my like personal traits, and also my ethics and values cultures would be enhanced by working in GT. ऐसे करके आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है ना. Then again, why big 4, why big 6, ठीक है, वर्क प्रेशर, ये सब पूछेंगे, वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. These are the most frequently asked questions और FAQs which they can ask, ठीक है ना. तो ये सब मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी अभी चैट बॉक्स में. बट मेनली what I wanted to say is कि इस टाइप के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना. लाइक टू ऑल द इंटरव्यूज आई हैव केम अक्रॉस. तो दिस वाज अबाउट योर HR राउंड. आई टोल्ड यू टेक्निकल राउंड आई जस्ट शेयर द क्वेश्चंस, एंड पार्टनर राउंड वुड बी कुछ भी पूछ सकते हैं वो. एंड GD आई टोल्ड यू कि it will be only tested on your communication and presentation skills, ठीक है. So these are questions you have to prepare for an interview. And बाकी इसके बाद एक दो tips और कि like if you are giving a physical interview or virtual interview, doesn't matter, just maintain the confidence throughout the interview even if you don't know any of the questions. Like suppose 10 क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन नहीं आए, मान लो मैंने सोच लिया 8 क्वेश्चन भी नहीं आए, doesn't matter, they are not expecting you कि आपको सब कुछ आए. Just make sure everything you are saying with confidence, ठीक है. आप मतलब डर नहीं रहे हो बोलने से, and also you are not like आपको जितना बताया उसको अच्छे से बता के आ रहे हो, right. And also like you have to sit straight in your interview. अगर तो फिजिकल देने जा रहे हो तो बिल्कुल ही like ऐसे स्ट्रेट बैठना है. एंड अगर वर्चुअल भी है तो जस्ट ट्राई कि आप चेयर पे बैठ के इंटरव्यू दो, एंड चेयर पे भी बिल्कुल स्ट्रेट बैठो. You don't have to bend, you don't have to like very in a sleepy position, because interviewer notice all these things as well. So you have to sit straight and you have to maintain a smile throughout on your face throughout the interview, because it shows that you are confident, ठीक है. And बाकी just prepare all these topics and just say with confidence, ठीक है. And बाकी और भी कोई कुछ क्वेश्चन बाहर से पता चल रहे हैं कि अच्छा ये भी पूछा जा सकता है, so that also you can prepare for your interviews, right. So this was from my side for specifically for interviews. If you have any doubt, any query, you can just unmute yourself and you can feel free to ask me, ठीक है ना. तो अभी आप लोग को पूरा क्वेश्चन पेपर मिल गया ना वे. मुस्कान has shared with you this such an important and useful document. तो है ना, जो भी डाउट्स हैं you can directly speak it out, है ना, and you can put it in the chat also. मैं chat की भी डाउट्स पढ़ के पूछ लेता हूँ. Just a minute. Hi Muskan, so I had a doubt. What is the timeline we can expect for Big Four selection process? Because abhi tak bhi there are no vacancies in Delhi NCR. So like, should I just go for mid-size or wait for a while longer? So yeah, see, the thing is this कि timeline ना ऐसा कुछ भी not able to locate the sheet shared by Muskan में. Locate क्या करना है सौरभ? वो भेजना पड़ेगा तुमको. तो आई विल शेयर इट ऑन योर ईमेल्स आल्सो, है ना. जो इफ आई शेयर इट ऑन योर ईमेल आल्सो एंड शेयर इट हियर आल्सो.
हाँ, so I was saying कि see the thing is this कि बिग फोर्स का ऐसा सीन है कि like nobody can actually guess कि वो एक हफ्ते में हायरिंग कर लेंगे या उनको 1 महीना लगेगा या कभी कभी 2 मंथ भी लग जाते हैं, बिकॉज उनका उनका प्रोसेस इतना स्लो है, ठीक है ना। तो व्हाट आई वुड एडवाइस इज कि जब भी आपका लास्ट डेट हो फॉर द रजिस्ट्रेशन, उससे 30 दिन पहले स्विच टू टॉप 20 फर्म्स। 30 दिन मान लो बचे हैं। guys, I would take each and every query. हाँ, मुस्कान, you can ignore the chat को Sure. मैं पढ़ के सुना दूंगा। ठीक है, sir. You just answer this now. Sure. So I was saying कि जब भी आपका लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो, उससे 30 दिन पहले you should switch to mid size firm और to top 20 firms, ठीक है। बिकॉज होता क्या है कि मिनिमम टू मिनिमम अगर आपका बिग फोर्स में सिलेक्शन भी मान लो मैंने होना भी है, ठीक है ना, तो मिनिमम टू मिनिमम 2 हफ्ते लग जाएंगे पूरा प्रोसेस होने में, मिनिमम, लाइक द फास्टेस्ट आई एम सेइंग, ठीक है ना। अगर कोई इतना भारी डिफरेंस नहीं है, अगर पार्टनर लेवल डिफरेंस है तो आई कैन से 1 हफ्ते में भी हो जाएगा वो चीजें। बट अगर आप नॉर्मल रूट के थ्रू जा रहे हो तो आपके कम से कम 15 दिन जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है ना। एंड ऑल्सो देयर इज नो श्योरिटी कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो एटलीस्ट 30 दिन पहले हथियार अपने सब छोड़ देना। मतलब इट्स नॉट दैट कि यू शुड लूज होप कि आपको मिल ही नहीं सकता, बट be clever and be like try in top 20 and mid size firm। and अगर 30 दिन बचे हैं तो कोई mid size firm या फिर top 20 ज्वाइन कर लो। बाद में you can take transfer or you can also go for industrial training, but yes for now I think you should switch when it's 30 days अगर बचे तो you should switch to top 20 and mid size firms। ना और किसी को ऑडियो डाउट है तो पूछ सकते हो। I'll just Yes, take sir. the chat. Muskan. Yeah, hi. Hello. हाँ, मुस्कान, मेरा ये डाउट था, एज यू हैव अर्लियर सेड दैट यू कैन टेक ट्रांसफर 30 डेज पहले। आप जो भी आपको मिल रहा है, बेस्ट मिल रहा है, आप उसे ले लो, एंड देन आफ्टर आपको ट्रांसफर अलाउड होता है। बट जितने भी मेरे को अभी तक मिली है टॉप 10 या फिर टॉप 15 वी कैन से, वो ट्रांसफर अलाउड नहीं कर रही हैं, तो उस केस में क्या करें? तो अंजलि, नाउ अगेन दिस थिंग ये होती है बहुत सारी फर्म्स में, तो अगेन आपको वही फर्म ज्वाइन करनी है, वहां पर ट्रांसफर दे रहे हैं। अब जैसे इफ आई टॉक अबाउट टीआर चड्ढा, टॉप 20 फर्म में आती है टीआर चड्ढा, एंड टीआर चड्ढा अलाउज ट्रांसफर, एसएस कोठारी अलाउज ट्रांसफर, ठीक है ना, मजार्स अलाउज ट्रांसफर, आरएसएम अलाउज ट्रांसफर। अब आप अगर एसएनबी में जाओगे तो एसएनबी ट्रांसफर नहीं देती, तो अगेन एसएनबी इज अ वेरी गुड फर्म। बट अगर आपका ऐसा सीन है कि आपको बाद में ट्रांसफर लेना है तो यू शुड नॉट ज्वाइन एसएनबी, राइट। तो वो उनकी आपको पॉलिसीज कंसिडर करके ही चलना पड़ेगा। या एससीबी डोंट अलाउ ट्रांसफर, हरिभक्ति डोंट अलाउ ट्रांसफर, इस टाइप की बहुत सारी फर्म्स हैं, तो आप उनके रूल्स और पॉलिसीज के अगेंस्ट नहीं जा सकते कि आप हमें ट्रांसफर कैसे नहीं दे रहे। आप ज्वाइन ही मत करो, सिंपल सी चीज है। आप ऐसी टॉप 20 फर्म ज्वाइन करो जहाँ पे ट्रांसफर दे रहे हैं, लाइक टीआर चड्ढा, लाइक एसएस कोठारी, ठीक है, इस टाइप की। यू हैव टू डू सम रिसर्च, तो उसके अकॉर्डिंग फिर यू हैव टू ज्वाइन, ठीक है ना। And Chaturvedi and Shah, I think it is one of the good mid-size firm. It is not under top 20 firm, right? It is the mid-size firm, mid-size ही है वो, ठीक है ना। And SP Chopra का steroid कैसा है, तो again SP Chopra is in top 20, तो अगर आपको 30 दिन में कुछ नहीं मिल रहा है तो I think you can join that. Okay. And many people are asking कि ट्रांसफर केस में इंटरव्यू में कुछ अलग पूछेंगे क्या, बिकॉज देन आपका थोड़ा एक्सपीरियंस रहेगा, तो देन मे बी आपके हाँ, एक्सपीरियंस पे तो कुछ आपका क्वेश्चन। हाँ लाइक राइट, तो उस केस में आपको एक्सपीरियंस भी अपना प्रिपेयर करना पड़ेगा। फिर बोल रहे हैं कि अगर Hello? वर्क प्रेशर के बारे में मैंने आंसर दे दिया कि हाँ वर्क प्रेशर में हैंडल कर सकते हो, तो बहुत ज्यादा काम करेंगे क्या? तो आई थिंक बहुत ज्यादा काम तो होता ही है, दैट इज ऑब्वियस, राइट। बट मुस्कान कैन आंसर दिस। एंड एक और क्वेश्चन है ऑन दिस पार्ट कि व्हाई दिस बिग फोर एंड व्हाई नॉट अनदर बिग फोर, इसका कैसे आंसर दें। एंड सपोजिंग दिस क्वेश्चन वुड बी इवन वुड बी स्लाइटली टफर अगर ये वीडियो का क्वेश्चन, बाकी लोग प्लीज म्यूट कर लो। So I think I already covered this in the session, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो I said कि आपको कंपनी के बारे में पढ़ के जाना है, राइट। तो जब आप उनके विजन और मिशन स्टेटमेंट पढ़ोगे तो you will get the points कि आपको क्या बोलना है। तो दिस इज द ओनली आंसर है। थोड़ा सा रिसर्च खुद भी करना पड़ेगा, मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकती, हर बिग फोर्स का अलग होगा, तो उतना आपको रिसर्च करना पड़ेगा, उतना टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। जिस भी कंपनी में जा रहे हो उसके बारे में पढ़ के जाओ, दैट्स इट। अलग अलग फर्म्स के बारे में पूछ रहे हैं, लोधा, हरिभक्ति, ठीक है, ठीक है। एक डाउट मेरा ये भी था कि हमारे से पार्टनर राउंड पे मेरे से पूछा गया था कि सम अदर फर्म्स आल्सो,
हैज यू गिवन इंटरव्यूज इन अदर फर्म्स आल्सो, तो उसका आंसर कैसे देना है? हाँ, तो उनसे बोलना है sir, I had applied in other firms as well, and like wherever I will get the first opportunity, I would like to join that. सिंपल सी बात है भाई, तुम जल्दी करा दो, मैं तुम्हें ज्वाइन कर लूंगी, खत्म बात। Okay. Sanju, you are trying to ask something because background noise aa raha hai, so you can just ask your question quickly and mute it. Excuse me, ma'am. Yes, Manan. Ma'am, I am getting Mahajan and Abra for internal audit. So is it a good firm? Yeah, so Mahajan and Avara is a good firm for internal audit, but make sure that आपको transfer नहीं मिलेगा, and I think वो लोग industrial training भी नहीं जाने देते. So if you are okay, We are not getting transfer and so industrial if you are training. okay with both the condition, then it is good firm to join. मतलब exposure wise, it is good. Ma'am, first, I have two options, Chaturvedi and Shah and Mahajan and Abra. So what would be my preference? In Chaturvedi and Shah, I am getting the Reliance team stat audit and Mahajan and Abra internal audit. तो यार it will completely depend on your interest area कि आपको आगे क्या करना है. अगर आपको like stat audit में रहना है, तो you could join that firm, ठीक है? I prefer stat audit, but as you said, Chaturvedi and Shah is a mid-sized firm and Mahajan and Abra is in top 20. ठीक है, तो यार देखो इसका दो रूट्स हैं. फर्स्ट थिंग इज, अगर आप महाजन एंड नावारा जाते हो तो यू वोंट बी गेटिंग ट्रांसफर्ड. तो लाइक सी अगेन द थिंग इज, आई कैन ओनली टेल व्हाट यू कैन डू. एंड में डिसीजन आपका ही रहेगा, ठीक है ना? तो अगेन अगर आप महाजन आयबारा जाते हो तो आपको ट्रांसफर नहीं मिलेगा. बट लेट्स सपोज अगर आप जो दूसरी फर्म बताया उसमें जाते हो, तो नाउ यू कैन ज्वाइन इट एज एन लाइक स्टैट ऑडिट में अभी ज्वाइन कर सकते हो, एंड बाद में यू कैन टेक ट्रांसफर. तो अब आपको देखना है कि आप कितना रिस्क लेने को रेडी हो, आप कितना टाइम इन्वेस्ट करने को रेडी हो, कि आप बाद में ट्रांसफर लेना चाहोगे. उसमें टाइम भी जाता है ट्रांसफर लेने में, इसलिए नहीं मिलता कुछ भी. तो दैट यू हैव टू थिंक अपॉन कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, कि लाइक वेदर यू आर ओके विथ वन फर्म और यू वांट टू स्विच, और आपके लिए सबसे डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट है, या आपके लिए ब्रांड वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर क्या, मतलब आर यू रेडी टू टेक ट्रांसफर, एंड ट्रांसफर के लिए आप जितना भी टाइम इन्वेस्ट होता है उसमें, वो सब आप लगाने के लिए रेडी हो कि नहीं. So all these factors you have to consider. Okay. Thank you, ma'am. Yes. Excuse me, ma'am. Guys, actually I have one more call, so मेरे को around 12 o'clock leave करना पड़ेगा, तो we have 30 minutes, so we can cover like you answer if anything specific you want me to discuss, या फिर इनकी queries ही लेना है अभी. Ma'am, Excuse me, ma'am. Ma'am, I have a so query. group discussion we'll do it after 12 or we'll do it now. Would you want to cover it? मुस्कान की group discussion में क्या होता है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, कैसे आंसर करना है? So यार ग्रुप डिस्कशन एक्चुअली मेरे टाइम पे हुआ नहीं था, तो आई एम ऑल्सो नॉट दैट वेरी क्लियर कि एग्जैक्टली होता क्या है. So I think Excuse me, sir. anything else you want to cover in detail, मतलब है ना, बाकी तो doubts तो आते रहेंगे. We can cover all doubts also, वो भी एक option है. Or we can cover any important topic. Let's say कि for example ये this is an area where you have a lot of knowledge, कि इतनी सारी mid-sized firms हैं which I would not, many of them would not be knowing and I would not be knowing. So let's say on this, because लोग अलग अलग firms के बारे में पूछते हैं, लोधा कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है. तो this top 20 firms में like how do you choose? इसमें भी कुछ can you give some guidance कैसे इसमें? तो यार ये सी लाइक अब कोई फर्म कैसी है दैट नोबडी कैन टेल, बिकॉज वो वहां पे वही बंदा बता सकता है जो वहां पे काम कर रहा हो. तो इसके लिए मेहनत उनको ही करनी पड़ेगी, इनको लोगों से कनेक्ट करना पड़ेगा जो भी उस फर्म में है, एंड उनको देन उनका एक्सपीरियंस पूछना पड़ेगा कि हाउ इज दैट फर्म. बिकॉज अभी अगर आज को मैं बोल दूं कि हाँ ये फर्म बहुत अच्छी है, अब मैं तो कभी गई नहीं, मेरे को नहीं पता क्या फर्म है, क्या कल्चर है, तो आई थिंक इस पे कोई भी अपना कमेंट पास ऑन करने का आई डोंट थिंक सो दैट होल्ड एनी वैल्यू. मतलब द ओनली पर्सन हु हैज वर्कड देयर कैन टेल दैट. लाइक मैं ईवाई और जीटी का बता सकती हूँ क्योंकि मैंने वहां पे काम किया है, बट मैं बाकी किसी फर्म का ये नहीं बता सकती कि वो फर्म कैसी है, वर्क कल्चर कैसा है, ये क्लाइंट बेस कैसा है, मेरे को नहीं पता. आई एम जस्ट टॉकिंग लाइक टॉप 20 या टॉप 10 है, तो बस वही नाम पता है कि हाँ ठीक है टॉप 20 टॉप 10 फर्म्स है, बट आई थिंक दिस नोबडी कैन टेल एग्जैक्टली कि कैसी क्या फर्म है. दिस ओनली दैट पर्सन कैन टेल जो वहां पे एक्चुअली में काम कर रहे हैं. एंड एक सिमिलर क्वेश्चन बहुत आ रहा है कि डोमेन कैसे चूज करें, स्टार्ट ऑडिट में जाएं, इंटरनल ऑडिट में जाएं, या कोई अलग टाइप का डोमेन, जैसे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का एक डोमेन है. तो यार ये डोमेन का ये सीन है कि यू हैव टू लाइक इन डिटेल यू हैव टू रिसर्च अबाउट द डोमेन. तो अब आप इसके लिए 3 रूट हैं जो आप कर सकते हो. पहला ऑब्वियसली गूगल है, गूगल में सर्च करो कि लाइक व्हाट इज एग्जैक्टली वर्क यू हैव टू डू इन स्टार्ट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, होता क्या एग्जैक्टली, ठीक है ना, एग्जैक्टली होता क्या इन दोनों डोमेन्स में.
तो फर्स्ट यू हैव टू रिसर्च के काम क्या चल रहा है दोनों डोमेन्स में, तो ये पहला स्टेप हो जाएगा. सेकंड स्टेप वुड बी टू कनेक्ट विद द आर्टिकल्स दोज हु आर वर्किंग इन दीस बोथ फील्ड्स. ठीक है, स्टैट ऑडिट वालों से पूछो कि उनका रोल क्या रहा है, इंटरनल ऑडिट वालों से पूछो उनका रोल क्या रहा है. ठीक है, देन थर्ड स्टेप इज यू हैव टू कनेक्ट विद क्वालिफाइड सीए जो कि इन दोनों फील्ड्स में काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये भी देखना है कि लॉन्ग टर्म आर यू एबल टू सर्वाइव इन दिस डोमेन और नॉट. ठीक है, नॉट ओनली एज आर्टिकल बट आप अपना लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेके चलोगे कि मेरे को इंटरनल ऑडिट में जाना है कि स्टैट ऑडिट में जाना है. तो यू हैव टू कनेक्ट विद क्वालिफाइड पीपल ऑल्सो जो कि इन डोमेन्स में काम कर रहे हैं, उनसे पूछो उनका एक्सपीरियंस कैसा है. जब आप इन 3-4 जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लोगे, आई डोंट थिंक सो आपको कोई भी कंफ्यूजन आएगी कि मैं इंटरनल ऑडिट में जाऊँ स्टैट ऑडिट में. यू विल हैव अ लॉट ऑफ क्लैरिटी कि किस डोमेन में क्या होता है एंड हाउ यू शुड प्रोसीड विद इट. And also I would like to take one like query of Sahana. So like I think आपने मेरे को LinkedIn पे भी message किया था. I think I missed it. So Sahana, you can unmute yourself. Like I would just like to clarify that. Hi Sahana, you can speak. Yeah, hi, Regarding Muskan. industrial training, I think Riya will be able to guide better. But anything from your side, Muskan, industrial training before जाने देता है नहीं, जाना चाहिए या नहीं, तो उसके भी बहुत doubts हैं, which you can just answer from your side also. Yes, so definitely जाना चाहिए industrial training में. And also yes, Big Four allow करते हैं industrial training जाने का. So yes, Sahana, you can please unmute yourself, वरना आपका doubt like मतलब रह जाएगा because बहुत सारे और भी doubts आ रहे हैं, but I want to just clear your doubt as well. No, I just sent a personal invite last night, I think, on LinkedIn. It was to What's your thank you doubt? for the Yeah. masterclass. No, I just joined video. Like I've spent 4 months here, and I was also looking for Big Four articleship opportunities Okay, okay. in Bangalore. Yeah. No Because doubt. actually I didn't Yeah. read your whole message because I Okay, was doing okay. something else. तो but मेरे को like ऊपर से notification आया था, but मैं फिर skip हो गया था, तो मैंने सोचा चलो अभी doubt ले लेते हैं. So yeah, congratulations for joining a video and बाकी post डालो and celebrate it. Obviously आप Big 6 join Okay. कर लिए हैं, तो अच्छी बात है. Yes, thank you. Yeah. बाकी कुछ हैं doubts that you know GD में बोल रहे हैं कि खाली top colleges, is it ऐसा कुछ है क्या that खाली so called top colleges से होना पड़ेगा तभी selection होएगा in Big Four? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है. I am not from any college, like मैंने भी DUSOL से ही किया है. So I think it's more about your communication and presentation skills, because जो लोग कॉलेज वाले बंदे like जो लोग कॉलेज वाले स्टूडेंट्स होते हैं, तो आई थिंक उनकी कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन पे उन्होंने ज्यादा काम किया होता है एज कम्पेयर टू जो नॉन कॉलेज वाले होते हैं. तो इवन इफ आपका कॉलेज नहीं है, if you are working on your communication and your presentation skills, it's one and the same thing. Like you have to work on your skills. ठीक है ना, कॉलेज ठीक है वो टैग मिल जाएगा, बट आई डोंट थिंक सो कि वो सिर्फ कॉलेज देख के ही हायर करते हैं. मे बी बिकॉज उनका कम्युनिकेशन वगैरह ज्यादा अच्छा हो तो उनका हायरिंग हो गया. बट अगर आपका भी कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन अच्छा है एंड आपका कोई कॉलेज नहीं है, आई डोंट थिंक सो कि लाइक वो आपको रिजेक्ट करेंगे उस बेसिस पे कि आपका कॉलेज नहीं है. ठीक है ना, सो आई डोंट थिंक सो दैट दिस कैन बी वन ऑफ द रीजंस. तो एक बहुत स्ट्रेंज सा क्वेश्चन, आई डोंट थिंक इसका कोई सही आंसर है, लाइक विद इन द बिग फोर व्हिच वन टू चूज. ये कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, बट समवन इज आस्किंग. यार एनी बिग फोर जो भी आपको ज्यादा पसंद आ रहा है, जिस लाइक see every big four has some attraction. तो जिस भी big four में आपको ज्यादा attractive लग रहा है कि हाँ मेरे को यहाँ जाना है, मेरा बहुत मन है, तो you can try that. And बाकी कोई भी big four मिले, one and the same thing, you can join any big four. Hi, Muskan. Hi Dipanshu. Yeah, how are you? I'm good and how are you? Yeah, all good, all good. Yeah, वैकेंसीज इन्होंने फ्रीज कर दिया अभी EY में आर्टिकल्स की, या अभी फिल कर दिए, या मतलब मेरी HR से हुई थी बात, तो यार वो आप तो ये कह सीए रहे हो, हैं. बट मतलब आप नहीं, मैं आर्टिकलशिप EY के में ही लिए हूँ. कैसे अप्लाई कर रहे हो? नहीं, actually he has a group where he is helping lot of people. So he has almost 1000 people जो articleship के लिए apply कर रहे हैं, and he's helping them. So he is asking you for information कि उनको कैसे help करना है. And तो यार EY में ना Actually, अभी मैं hiring टैक्सेशन में हूँ, मैं टैक्सेशन डोमेन में हूँ, मैं भी EY में ही हूँ.
अभी गुड़गांव ऑफिस, बट एक्चुअली अब इसका मुझे ऑडिट का अभी इतना नहीं पता। जो मैंने फ्रेंड से पूछा, सीए फ्रेंड से, वो कह रहे हैं कि उसमें आर्टिकल्स के लिए हमारी टीम में नहीं है। तो जस्ट फॉर आस्किंग तो यार सी अभी ऑडिट के लिए सॉरी अभी आर्टिकल्स के लिए हायरिंग चल रही थी, ठीक है ना, लास्ट वीक तक आई थिंक हायरिंग वाज गोइंग ऑन। तो आई गेस कि अब उन लोगों ने एक्स्ट्रा रिज्यूमेस लेने बंद कर दिए हैं, बट अभी जो जितने रिज्यूमे उनके पास आ गए 1-2 हफ्ते में, आई थिंक दे आर प्रोसेसिंग दोस रिज्यूमेस, एंड उसके बाद अगर उनको लगता है रिक्वायरमेंट तो दे विल अगेन लाइक अगेन कम विद वैकेंसीज। बट आई थिंक एज ऑफ नाउ यही सीन है कि लास्ट वीक तक तो दे वर टेकिंग रिज्यूमेस, एंड एज ऑफ नाउ आई थिंक उनके पास इनफ रिज्यूमेस आ चुके हैं, तो उन्होंने फॉर द टाइम बिंग रिज्यूमेस लेना बंद कर दिया है। बट अभी इंटरनल वही शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह आई थिंक चल रही है इनकी। ओके ओके ना, मुझे लगता है कि अभी और रिज्यूमे तो एक्सेप्ट करेंगे नहीं, तो वेट करना चाहिए जो पहले राइट ऑलरेडी राइट आ चुके हैं उनको। ओके ओके, थैंक राइट। एंड एक और कॉमन क्वेश्चन रहता है दैट यहाँ पे रेफरल का बहुत रोल प्ले करता है, सो हाउ बिग ऑफ अ रोल इज दैट, इज हाउ Yeah. इम्पोर्टेंट इज दैट? सो यार अगेन रेफरल बहुत रोल इम्पोर्टेंट करता है, नो डाउट, ठीक है ना। तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू ऑलवेज अप्रोच टू अ पर्सन, टू अ हायर अथॉरिटी, जिसकी भी हायर अथॉरिटी है उस वाले पर्सन को आपको अप्रोच करना है फॉर रेफरेंस, ठीक है। अगर आप किसी भी आर्टिकल से रेफरल लगवा रहे हो या फिर आप किसी भी मैनेजर से रेफरल लगवा रहे हो, तो बहुत डिफरेंस है दोनों में। तो ऑलवेज गो फॉर हायर अथॉरिटी, मैनेजर, डायरेक्टर, पार्टनर, उनको ही रीच आउट करो, क्योंकि उनका रेफरेंस ज्यादा मैटर करता है एज कम्पेयर टू आप किसी भी लोअर लेवल के पर्सन से अपना रेफरेंस लगवा रहे हो। So, vacancies in this. Okay, hi Riya, welcome. And जो भी industrial training doubts है, I think you can ask her, right? Because So, she... Yugandhar, can I leave now because I have some urgent meeting? Okay, sure. So thanks a lot, Muskan. It was really useful. And वो जो एक document था, if you can share it with me, then I'll share it with all these, all of them. Sure. And thank you so much, guys, for connecting and for joining in and for giving your time. And I hope you all get a good firm. बाकी LinkedIn पे पूछ सकते हो डाउट कुछ भी। And selection होने के बाद you can thank her and for all the help she's given you. So definitely. Okay, thanks a lot, Muskan. Thank you. Dipanshu, from your side, anything you want to add? कुछ यहाँ पे what has not been covered, and then है ना on because you have referred so many CVs, तो कहाँ पे issue आ रहा है, कहाँ पे gap आ रहा है, कुछ ऐसा है तो we can actually those the CVs they have selected, I have seen the common thing they are considering extracurricular activities. So basically what extracurricular activities mostly students learn from regular college, not now they actually if I am the HR, I am receiving 100,000 resumes and I have vacancies of only 10 students, then I will look for the best na. So how first I will eliminate those students having cleared their CA inter in November 22. Then I will reject those students and those have open college. Then I will come with the 100 resumes. Then out of 100 resume I will see who have attended the regular college and who has done the extracurricular activities, because I need a good time for taking interviews of all the deserving students. One other thing one can do is taking the group discussion, because purpose of GD is mass rejection. If you are taking GDs of 10 students, you can easily select 2 students, because 10 में से 5 तो बोलेंगे नहीं, ये तो पक्की बात है, वो तो एक दूसरे को देख रहे होंगे। 5 बोलेंगे, उसमें से 5 की कम्युनिकेशन चेक हो जाएगी, जिसमें से 2-3 की अच्छी होगी और हम इजीली 2 सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर मैं होऊंगा तो मैं तो GD कंडक्ट करवाऊंगा अगर बच्चे ज्यादा हैं, बिकॉज इजीली में हो जाएगा मेरा। उसमें ये भी नहीं होगा कि बच्चों को कि रिज्यूमे के बेस पे हमें वो कर दिया, शॉर्टलिस्ट नहीं किया, तो मतलब बेटर ऑप्शन तो GD है इस केस में। बट ये तो अभी यही कर रहे हैं, कॉलेज वाला देख रहे हैं एक्चुअली, जो मेरी बात हुई थी और जो मैंने एक्चुअली में देखा है। बट होना तो नहीं चाहिए, बट एक्चुअल में है ही है, अब क्या कर सकते हैं इसमें। एंड कुछ ऐसा है क्या कि किसी एक बिग फोर में GD ले रहे हैं, किसी में नहीं ले रहे हैं? KPMG में आई थिंक असेसमेंट टेस्ट के बाद है GD। आई थिंक डिलॉयट में कह रहे थे बच्चे, EY का IM नोट कंफर्म नहीं है। EY में तो डायरेक्टली जो अभी 3 बच्चे जो मेरे थ्रू हुए हैं उनका तो डायरेक्ट इंटरव्यू हुआ है, और तीनों ने रेगुलर कॉलेज किया था। तभी मैं कह रहा हूँ तीनों का रिज्यूमे आप देखोगे तो अल्टीमेट रिज्यूमे, मतलब अलग से पता लगता है कि हाँ रिज्यूमे में कुछ लिखा हुआ है। हाँ फोन जा रहा तो बढ़िया।
तो बाकी लोग प्लीज म्यूट कर लो. I'll just Sure. अब मैं ये बाकी बच्चों को ये नहीं कह रहा कि आपने मतलब चलो कॉलेज रेगुलर नहीं किया या ओपन किया, मतलब आपसे कोई गलती होगी, यू शुड अप्लाई फॉर ऑल द बिग सिक्स, मतलब लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हो. मैं यही मतलब अप्रोच भी, मेरा सेशन कंडक्ट कराता हूँ 1-to-1 रिज्यूमे, आप रिज्यूमे भी रिव्यू करवा सकते हैं मुझसे. और मतलब मुझसे मैं अप्रोच भी फॉलो करता हूँ कि क्या बिग सिक्स में कैसे अप्लाई करते हो अदर देन रेफरल वाली अप्रोच, तो उसके लिए भी आप मुझे अप्रोच कर सकते हो. बाकी कि हम तो अपना बेस्ट ट्राई कर सकते हैं. अगर किसी को मतलब खुद ही लग रहा है कि मुझे मतलब बिग सिक्स नहीं मिल रहा, तो यू कैन ट्राई फॉर टॉप 20 रादर देन कि अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय कि 1 महीना 2 महीना और वेट, उससे मतलब आपकी टॉप 20 वाली अपॉर्चुनिटीज ना चली जाए. मेरा कंसर्न ये रहता है. और काफियों ने अभी ज्वाइन कर लिया मेरे कहने पे, जिनका मतलब रेगुलर कॉलेज ही नहीं है, मतलब जो बीकॉम कर ही नहीं रहे, तो उनको मुझे तो नहीं लगता कि उन्हें बिग सिक्स कंसिडर करेगी एनी बिग सिक्स. तो उन्हें तो मैं यही सजेस्ट करता हूँ, अगर आपको टॉप 20 मिल रही है, कोई भी मिल रही है, मतलब टॉप काफी अच्छी फर्म है, उनके हैव गुड क्लाइंट बेस, तो मतलब मैंने अपनी लिस्ट भी शेयर कर दी थी, इवन एचआर मेल आईडीज भी शेयर कर दी थी. आप मतलब एटलीस्ट यू शुड शेयर योर रिज्यूमे टू देम. मतलब काफियों को कॉल्स भी आ रही है, बट उनकी यही कंडीशन है कि यू शुड इमीडिएटली ज्वाइन, बिकॉज उनको भी पता है कि बच्चे बिग सिक्स के पीछे भाग रहे हैं, तो मतलब बच्चे पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे, तो इमीडिएटली ज्वाइन करवा के उनको रजिस्टर करवा लेंगे. देन उसका ट्रांसफर वाला केस बन जाएगा बाद. ट्रांसफर वो देंगे नहीं इजिली, और ये भी कह देता हूँ मैं, बिकॉज तो उन्हें पता है. काफी आई थिंक हाँ, फ्रॉम योर एक्सपीरियंस ऐसा लग रहा है कि रेगुलर कॉलेज इंपॉर्टेंट है, बट आई थिंक उसके बगैर भी हो जा रहा है. लाइक पीपल आर उसके बगैर हो जाएगा इफ बच्चा मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी है थोड़ा. अगर बट वही लिख रहे हो, मतलब अगर आपको 100 रिज्यूमे दे दिए, वही सेम चेप रहे हैं सब, वही मतलब आईटी एंड टेक्निकल स्किल्स, वही सॉफ्ट स्किल्स, वही एक्स्ट्रा करिकुलर में वही 2-4 चीजें, स्कूल में हाउस कैप्टन था, क्विज एंड डिबेट में पार्टिसिपेट किया था, वही 2-4 लाइन सब चेप रहे हैं. बिकॉज डिबेट क्विज में क्या ही पूछ लेंगे, उन्हें भी पता है. बाकी सी एंटर तो देखो सबने क्लियर किया है, चाहे किसी ने नवंबर 22 और मई 23 में किया है एक एक करके, चाहे किसी ने बहुत ग्रुप्स किए. ये है कि रैंक होल्डर को एज मिल जाता है. रैंक होल्डर ने अगर कुछ भी नहीं लिखा होगा तो उसे मिल ही जाएगा, बिकॉज पता है कि बच्चा इंटेलिजेंट है. उसकी तो बात देखो, देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. तो मतलब मैं तो कहता हूँ कि मोर देन 600 आउट ऑफ 100 किसके भी है, उसको तो मिल ही जाएगा. उनको तो मे भी हो सकता है मिल भी गई हो, वो तो चूज कर रहे होंगे आउट ऑफ बिग सिक्स कौन सी लो. उनके लिए तो ये ऑप्शन हो गया अवेलेबल आज की डेट में, मुझे लगता है. बट मैं उनकी नहीं है, मेरा कंसर्न हमेशा मतलब एवरेज भी स्टूडेंट्स के लिए रहता है. तो उनको तो एनीवेज मिल ही जाएगी अगर हम गाइडेंस दे ना दें. सो we'll just है ना रिया से भी पूछ लेते हैं. सो इंट्रोड्यूसिंग रिया टू ऑल ऑफ यू. शी वाज विद जीटी एंड नाउ शी इज विद रैकेट, एंड सो शी हैज एक्सपीरियंस. उसने बिग फोर में भी वर्क किया है, एंड देन शी इज डूइंग हर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आल्सो. तो फ्रॉम योर साइड एंड लेट्स से है ना, जनरली डोमेन वाइज लोग ऑडिट में ज्यादा जाते हैं. सो how did you come to this how to choose between non audit domains and non audit domains में क्या क्या options रहते हैं. And ठीक है, so first we'll cover that part, then we'll go to the industrial training part. Okay, sure. So hi everyone. Am I audible right, Yugandhar? Yes, you are. Yeah. So hi everyone. So as Yugandhar introduced me, thanks for my induction, and I'm happy to be part of this session. And sorry for the late joining. I got stuck in traffic. So regarding that, how my articleship. So I did my articleship with Grant Thornton in the indirect tax domain, which is different from what generally people go for, which is statutory audit. I go for indirect taxation, and what was the reason that I went for indirect taxation was that my interest or my inclination towards taxation department, that whenever I used to study in intermediate, I used to get a lot of interest in the provisions, and that's why I wanted to, I was having a theoretical experience of it, so I wanted to have a practical experience of it. That's why I did my articleship in indirect taxation department. Now, what is the benefit of doing in a niche, and what are the disadvantages? Riya, you went on mute. Hello. Yes. Am I audible? Yes. Yeah, so I was covering the pros and cons of indirect taxation department, or if you do your articleship in a particular domain.
So first of all, the pros is that if you do from the Big Six department, you will get the experience of everything of that department, and you will be getting a top-notch experience of that department. So I got a very good client in which I worked. I touched each and every part which is covered in the GST. And if you did in CIT, there is corporate international good experience. थोड़ा सा audio Firstly, break now हो what गया. is the call? Last 10 seconds. Corporate indirect tax, that part से. Hello. Yes, now it's Fine. थोड़ा lag कर रहा है. I think ठीक है. Now it seems to be fine. I think mine too. Is it fine now? Just 1 second. Is it fine? Am I audible? Yes, better. Yeah. So I was talking about the indirect taxation itself. So the cons that I would cover is that you get experience of only one department. So you don't get others department, but in statutory audit you get a little bit of everything. So that is the main thing that you get in statutory audit. But I was not at all interested in doing all those things, so that's why I did go for it. But if you did articleship in like for 3 years and then do get 2 years of experience after qualification also, so you have covered like 5 years into one department, so it would be very difficult to shift your profile after that, right? If you are doing your articleship and then after 2 years qualification or 3 years anything, then like my managers used to be, work in that department like for 5 years, so it got very difficult to change your profile. So that is the main cons that you should consider, that if you're thinking of doing practice after that, then it is like the best thing to do your articleship from Big Four, because you will get the top-notch experience and you will be, totally ready for doing your own practice in that particular department. And now everyone need an expertise. Everyone is searching for the expertise, and you will be getting that expertise, and it will be very easier for you to start your practice or anything of your own in future. So that's how I end up doing one into one department. तो यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आता है that when we hear about things like GST या indirect tax, जो मन में बैठा रहता है which that is कि return filing रहेगा, but I don't think that is the thing that you will be doing at GT. So what exactly is the nature of work? क्या काम रहता है? So the work is, I will not say कि return बिल्कुल हम file ही नहीं करते हैं. That is also the part of it. I did file returns, so that is the monthly activity. ठीक है, to be very honest, I was, not at all liking. I was liking the department and everything, but it got monotonous because you are doing the same activity every month, right? So that's why I switched over the industrial training. That was the reason. But it is not at all like that we did only return filing. I did everything which is covered. I worked upon the notices, I worked upon, the department visits and all, and I worked upon the litigation part of it, advisories I did, and we used to visit the client place also. So it's not like that we did only the returns part, but everything which is covered in taxation which you can do. And I think that is, I just wanted to clarify that doing returns is not at all wrong, right? Everything starts with it. If we know that what is GSTR1, then only we can know ना कि हमें notice कैसे भरना है, हमें notice कैसे बनाना है. अगर हमें basic ही नहीं पता तो हम notice कैसे बनाएंगे? We all want to jump to the next part, but we don't want to do the first part. If you don't know the first part, how will you be able to do the second part? So first know the first part, and then you will be able to do the second part. So it is always step by step. So articleship is not at all about that what you are doing. It's all about how you are doing it. So doing step by step is always better. Yeah. And now everyone can just put your doubts in the chat, and if anyone wants to ask it on audio, you can raise your hand. I've disabled unmuting yourself because disturbance हो रहा था थोड़ा. Meanwhile, we'll move on to this industrial training part, because till now we've had around
2 to 3 hours of session has already been completed, and we kept on hold all the industrial training doubts कि जब रिया आएगी तो उससे पूछेंगे कि इसमें क्या process रहता है, कैसे होता है. तो how did you decide कि मेरे को first is taking the decision कि मेरे को industrial training जाना है. So how did you come to that decision? And second is again the application process. How do I find the vacancies? How do I apply? What all do I need to prepare? All those things. So first, how I decided that I want to go for industrial training was, of course, having a different experience. I wanted to have two experiences with me, one of the firm and one of the industry, so that I can decide that whether I want to go to which, basically I want to go for the industry or whether I want to go to the firm. So that was the main reason. But the thing that was stopping me was, of course, the leaves. That leaves that we get in industrial training is comparable to the firm is quite less, which is 3 months. And if I would have been into GT itself right now, so it could be around 6 months. So the leaves difference was the main criteria that was stopping me for not going for industrial training. But since I wanted to have a different experience, so the main reason I went for industrial training was having a different experience so that I can make a better decision making in the future. So that was the reason. And if I talk about the application process, Just to add one point, sorry to interrupt you. For the people who are joining now, for them even this problem will not be there, because whether you join industrial training or continue with articleship, you will get 7 to 8 months of leave minimum. So now this should not be a criteria at all कि मेरे को industrial training नहीं जाना है, because because since the new course is there, so this criteria would not be there. So you just have one thing that कि मेरे को एक नया experience चाहिए, I want to know something new, मेरे को industry में कैसे काम होता है, एक firm में कैसे काम होता है, so ऐसा. So someone has asked that big four articles. No, nothing is like that. But yeah, थोड़ा एक brand का value जरूर होता है आपकी CV में. Like some people prefer that if you have the brand in your CV, that is preferable. But it is not like that they have like the very higher chances or something. It is not like that. If you also apply, if you also perform well in the interview, then you also have the equal chance of getting into that company. It is not like that. Then coming to the application process. So application process is very much similar to the articleship, but getting for this is bit difficult. What I would say, because for articleship you see like there are so many vacancies are floating on the LinkedIn, but you will not see that much vacancies for industrial training, because there are very few vacancies. Like in my company, I am the only industrial trainee currently working here. So because there are very less industrial trainings, and whereas I was working in GT, there was like in my team itself there were 2-3 articles, so there is like a huge difference. So there is a, first of all, you can understand the ratio difference is like there is less requirement and the people who are applying are more, right? So that's also create a difference. Now how will we get to know about the vacancies? So I followed a simple strategy. So first in the morning I used to test the people on LinkedIn, then I used to check the Telegram groups and WhatsApp groups and used to apply wherever I want to. Then I used to float the mails itself. I used to schedule in the night, and then they used to get floated in the morning itself. So that was the simple strategy of application. So what works for me? So what works for me was cold emailing works really well for me. I cold emailed the HRs and I got the response from them as well. So cold emailing is very simple, like you are sending a mail. It's just that they are getting the person in hand. So that's why the cold emailing worked for me. But connecting with people on LinkedIn and getting reference from them, I got in Articleship group due to my LinkedIn connection. I was not knowing her, but I texted her in a really well mannered. I got into that company. So that's how I applied. But there is no particular process. That's how you can go for it. Just be active in WhatsApp groups, Telegram groups, and that would work wonderfully. And what is the system like after you become a CA? Preference मिलता है जो वहाँ पे industrial training किया हुआ है, या उनको भी same process में जाना पड़ता है, या maybe other industries में अगर उसको move करना है तो उसको preference मिलता है. So how does the opportunity change after you become a CA? So that is the bad thing about the industrial training. So once your period is completed, it all depends upon your performance that you will be rehired or not. Generally in firm we have this
back that if we couldn't clear our C examinations, we still there be in the form. But if in industrial training you couldn't clear, your period is once completed, it's very much dependent upon that company that they will be rehiring you or not. It will all depend upon your performance. And if I talk about Reckitt, so they have like a very strict criteria of getting a rank, that if you get a rank, then only you will be rehired. And I don't know, because there have been not much industrial trainees here, but I've heard about the or other industrial trainees also. It is like very risky thing that just and I couldn't tell this thing before considering for industrial training. Consider this point also, that if you are not very good in your studies part, I mean you have not covered like much subjects, then just reconsider this point, because in industrial training there is like very less chances that they will rehire you. But of course, if you clear on time, they will of course rehire you. That will be the point. And at least in Big Four, there is this one that whether you become a CA, whether you don't become a CA, of course the designation will be different, but you will get rehired after your articleship period is over. Right? Yeah, right. So, and what is the process like? So, are the steps different? I don't think there would be an assessment test for these industrial trainings. And so, you mentioned a lot of ways in which we can try for industrial training. But how do I know which all companies are having vacancies for industrial training, so that I can decide who to reach out to? So you can know through, like, there is one HR email ID, a form also which you can use for it. Like, you can get to know through Telegram groups only. Like, there are so many Telegram groups in which you will get multiple vacancies on daily basis. There are WhatsApp groups also. So you can just go to Telegram and search SE industrial training, and you will get so many groups, and you can join those groups. And those vacancies are really helpful. You will easily get a calls from them itself. So it is not a like, and if I, as you said about the assessment tests, so some companies have the assessment test, like Swiss conduct the assessment test, and after that they have the interview process. So it is all dependent upon different companies. Like UBS has only one round of interview, but like mine was 2 rounds of interview in whatever companies I gave. So assessment test is there for some companies. I think Deutsche Bank also conducts the assessment test. And generally, what kind of stipends can you expect? Because so in let's say Big Four, 15, 20, 25 is the normal pattern. So does that change here? It varies from company to company, but any idea on that front? So it will vary from different to different companies. So it could be, you can expect from 25 to 50K. And if you get into something like D Show and BCG, they provide very good stipend. But it varies from all the industry. It would be around 25 to 50K. In fact, there are, I personally know a lot of vacancies at ITC, and they've recently increased it from 18,000 to 25,000. So if any of you want industrial training there, you can reach out to me also. Right? And what kind of work experience do you need to have to crack the interviews? Or, how should I actually prepare for these interviews at industrial training? So this is the question I get a lot personally, because I was in indirect taxation and currently I'm in finance department, which is completely different work I'm doing. So how I end up? So first of all, as I already said, that they want to know how did you do your work, right? They don't want कि तुमने किया क्या है, तुमने करा कैसे है. Because in my interview, I said like that I worked upon some automating some process which we were doing manually. So these type of things we can add up. So how to prepare for the interview? So personally, I didn't give any interview in the banks itself, because I didn't want to go to the banking industry. I mainly gave either in the e-commerce industry and FMCG industry. So I was restricted to 2 types of industries basically for my industrial training. So if you go into the banking industry, I can cover like HSBC, then there is Deutsche Bank, Credit Suisse. So in these type of industries, the questions might be related to India. First of all, you can divide your interview into 3 parts. So first it covers with tell me something about yourself. Then there are technical questions, and then there is you have to ask me questions, right? So for HR questions, you can have the
that is will be telling something about yourself and how why you want to choose this industry or something like that. Then covering the technical part, then there would be India's. That is the mostly asked thing in interviews for banking industry. And mainly so is that just 1 second, Yuventer. I think my laptop battery is getting down. Just Sure, 1 sure. second. Should we wait for vacancies in Big Six? See, this question we've answered repeatedly. I think at least 5 or 6 times we have answered this question. Should we wait for vacancies in Big Six or join mid-size? Okay. Colleges. So Divyam, you're asking how to reach people on LinkedIn. See, I think it is about drafting a good message. That is one part. And second is it is a thing about quantity. आप जितना ज़्यादा लोगों को reach out करोगे, response rate percentage wise कम रहता है. So your message has to be good. And second part is you have to reach out to more people. Generally, you can expect a 5 to 10% response rate. So 5 to 10% response rate means that आपको अगर कुछ अच्छा chance चाहिए, you should be reaching out to at least maybe 40 to 50 people probably. Video, have a doubt. Okay, so now I'll just okay, Riya, you are not able to unmute. You're already unmuted, I think. No. Can you try speaking? I'm not sure whether it's working or not. Yeah. Hello. Okay, now it's fine. Yeah. So I was speaking about the interview process basically. So in the banking industry, the questions would more of like from India's, and it could be technical questions varying from the type of industry also. So if you're applying for the banking industry, they could ask repo rate, reverse repo rate. So these type of questions also. So you can prepare according to the industry as well. So that's about the banking industry. And in the industries, I gave interviews like FMCG and e-commerce industry. So in these type of industries, the questions that would ask from me moreover from finance. And what for from finance, like ratios, they can ask you that what is debt equity ratio. So these type of questions, and moreover that moreover questions from my experience itself, that what I did in my articleship, how I did it, what is the best thing you did, what was the challenging part you did in your articleship. And like I got 2 sports awards. So questions from my CV, that how you got these two sport awards, how you end up with these. So what you can prepare for industrial training is your CV, HR questions, and looking up to your experience. Just look at your, if you have worked upon in Satyar, then you will not remember everything you did. Just look through your work papers you did, work you did, so that you can explain it well. You can talk in the numbers, you can talk about the facts. Just look up to your experience, just have a go through it, and then you can move on to that what is the question to be asked. So this is the one thing that helped me to ace
almost every interview I gave, is that I always used to have a very good research on what is the question I'm going to ask from the interview. This is the question where mostly people lacks, because they ask like a general question. I used to ask very personalized question from the interviewer, because if you get to know that who is the interviewer, then it is very important that you research that interviewer really well on LinkedIn, that what he, from where he did his articleship and how he end up in this company and everything, just looking up to them, their experience. Then you can ask a little personalized question from that interviewer, and it will reflect that yes, you did your own research and you are asking something specific, not general. And it will create a really good impression, and you will be that interview will remember you, and there is like a huge chances of getting selected. So we can ask a question like, from my interviewer I asked that you did your articleship from PwC and you are currently looking into Rec and Kaiser, so how did you end up in this company? So why did you prefer industry after the firm? So these type of questions you can ask that can create a good impression. So that is about the interview, that how you can prepare. And so that is mainly. And if you apply to the finance industry, like there is Edelweiss is there, so you can, if you JP Morgan and Morgan Stanley, Goldman Sachs, then into these industries you can mainly the questions related to finance and India's are an SFM that I was missing can be asked. Okay. And now there's one doubt which people are having, that let's say I am getting my preferred field or my preferred domain in say GT or BDO, versus I'm getting a field which I don't like, or which I don't prefer in say Big Four. So on these, what should I choose? I would say that you should prefer field over the brand, because brand is moreover same everywhere, okay, but the field in which you are working, you don't know what the brand is, okay, but in the field you are working is the most important thing, the field that you are choosing. So always go for the field, the work you're gonna do there, the thing that you like, not the brand. In fact, when we look at vacancies post CA, always the criteria is Big Six. It's almost never Big Four, and even if it's written Big Four, you apply with a Big Six articleship, you'll get equal weightage. So it is absolutely, It's there is equal no weightage. difference that way. Yeah. And in general also, I'll always suggest that go for the field, because in the field that you're working is the, because you have the interest in it, so you will always try to give your best into that field, because in the future you might have regret कि हाँ अगर मैं उस field में काम कर लेता तो शायद मैं कुछ अच्छा कर लेता. तो इस type से हो सकता है, but always go for the field, because that is something that you like to do, right? So I think we don't have too many questions, and if anyone has any questions, you can raise your hand and ask it, or you can send it in the chat. And the core part of our session is mostly completed. Anything else you'd like to add, Riya? Anything which you feel that they should keep in mind before applying, whether it's for their articleship just after they've just cleared this inter and now they're applying, whether it's for them or whether they are applying for industrial training after 1 year? Yeah, so the main tip is that just keep on putting efforts, guys. And the one thing that I've learned is it doesn't matter in which brand you're working, it doesn't matter in which field you are working, it matters that how much efforts you are putting in. If wherever you end up, just give your 100%. If you're working into the mid-size also, I've seen people who have done wonders in their life even if they did your articleship from mid-size. It's not like that. It's just that we are getting so much attracted towards Big Four. Of course there are perks of working into Big Four and Big Six, I am not denying that fact, but wherever you end up, just give your 100% in your articleship, because articleship, as we all know, it is not something which is I'm telling, that it is very important phase. You have done the half pay, you have completed your CA intermediate, now you are entering the most important phase of CA, which is the CA articleship. So just give your 100% wherever you end up, and जहाँ पर जाना है ऑफकोर्स उसके लिए 100% एफर्ट डालो, बट अगर इफ यू डोंट एंड अप वेयर यू वांटेड टू बी, बट जस्ट डोंट रिग्रेट और समथिंग कि हाँ शायद वहां पे हो जाता, डोंट, जस्ट wherever you are, just do it and give your 100%, because articleship में आपको काम सीखना है और वो आप सीख लोगे, खुद से भी सीख लोगे अगर आप फॉर्म में नहीं सीख पा रहे हो तो.
We'll just take a doubt from Megha. Hello, ma'am. Hello, sir. Hi, Hello, yes, we Megha. can hear you. Actually, my doubt was like I have applied in various firms, and even though in Big Four, and I can say in Big 20 and mid-size firm, I got a reply from mostly mid-size firm right now, but I haven't get any reply from the Big Four. So what would be the approach of mine now? Because mid-sizes, they are saying like join our articleship from now only. Okay, and you are giving interviews into the mid-size firm right now. Yeah, but actually, I need Big Four. So this is the common doubt that we get, that because everyone wants कि join कर ले हमको, because they also wants कि हर कोई Big Four की तरफ जा रहा है. So you Yeah. can go it with like कि अभी तो उनको just try कि you can, how you can, you know, कि उनको टाल सकते हो या फिर कुछ कर सकते हो, because if you want to go for the Big Four, it will take time. You have to be patient with it, because and you must be wanting into Delhi NCR, isn't that like? Yeah, So Delhi the or vacancies, Gurugram, no problem. That so the vacancies are very less and the demand is huge. So that's why yeah. it gets late. But if you have applied, just try connecting with more people over LinkedIn and getting internal reference. Because in Okay. this, I think internal reference is something which can help you more. Okay, try connecting more people over LinkedIn, talk to them, you know, text them messages, and so that can help you. But just be patient with it, and if you are getting any offer, so just accept it, but don't go for it if you want to go for the Big Four. And just Just one take more some thing. time. Like if I join the mid-size firm, but they mostly the mid-size firm are like we will not allow you the industrial training. Then it is and I want to join industrial training. Then don't go for it. Then don't go for it. Okay, so First like of if all, uh, first of all, these type of restrictions shouldn't be there, because if ISA is allowing it us for the industrial training, then who they are stopping us if we want yeah, to go for the industrial training. So then don't go for that for that firm if they are stopping you from industrial training or from taking transfer. Just okay, first of all, अभी तो सब जगह apply करो. Okay, just wait. okay, okay, सिर्फ मिड फोर में नहीं होता है, टिल द एंड यू कैन स्टिल गो फॉर द मिड साइज. वो तो मिल ही जाएगी ना, ऐसा तो नहीं होगा कि वो भी नहीं मिलेगी, right, दैट यू विल नॉट एंड अप विद एनीथिंग. बट yeah, जब तक आपके पास टाइम है, अप्लाई करते रहो, एफर्ट्स डालते रहो, कहीं ना कहीं तो हो जाएगा. अगर नहीं होता तो मिड साइज में चले जाना. यू कैन गो लाइक yeah, दिस. And you can And all probably the do it in best. the last few days, है ना? तो last, so as Muskan was also saying कि आपका attempt delay नहीं हो, so in the last 30 right. days of your timeline being ending, at that point you can just go and join that mid-size. Okay. लास्ट So में रजिस्ट्रेशन करा लो, और फिर उसके बाद अगर वो ट्रांसफर अलाउ करते हैं तो गो फॉर द ट्रांसफर. You can also go for okay. this option. And can you have some mid-size firm name which allow industrial training? Like I've researched many, but I didn't get that. So to be very honest, Megha, I'm not So at all this aware one about Muskan had answered है ना? Muskan ने almost 10 firms का नाम लिया था कि ये 10 firm में allowed है, ये 5 firm में allowed नहीं है, and Yeah. I also didn't know कि ये सब इतना detail में she has this data, so you can Right. see the recording, वो वाला part देख लेना. So she was Okay. saying TR Chetta में it's allowed, Yeah. some other firms में it's allowed, and ये firm में it's not allowed. Hari Bhakti में it's not allowed. Hari Bhakti is also one of the very big firms only, so you know, it's almost I would say at some level equivalent only to Big Six, but Yeah. कुछ में allowed नहीं, कुछ में allowed है, so you will get to know that. Okay. in all the Thank big you. six firms it is allowed. But Okay. if I talk about top 20, like then Mazars, it's allowed. Then SS Kothari, I think so it's allowed. I'm not It's sure allowed. about It's Yeah. allowed. It is SS allowed, I Kothari, think. it's allowed. SSKM. So these type of companies, almost I think every top 20 allows, except few. Like then he talks about Hari Bhakti, and few mid-size I'm not aware, to be very honest. Okay. Thank you Okay. so much. You So can ask this question when you got the chance to ask.
Okay, so thanks a lot, Riya. I think we have, completed most of the doubts which everyone has. So there would be no point, extending it till 1. And it was such a useful session, especially on industrial training. And अच्छा, कोई question answer नहीं हुआ है क्या? How long, यार ये वाला जो question है, I don't know how many times we'll have to answer this. How long should we wait for Big Four replies? So this we have answered 7 or 8 times. है ना? कल भी answer किया था, आज भी answer किया है. So the process takes time. आपने apply कर दिया, you applied through multiple references. If you have it, you apply it there. And then 15 दिन भी लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है. It can take longer also, right? So that is the answer to your question. Okay. So there is one question from Mohini. What can we ask from interviewers for articleship? So that can be similar, like that you can have research a specific question from the interviewer when you know about the interviewer, or you can ask a specific question about the firm also. For example, you did some research about Deloitte India, you read some news or something, and you can ask them question. If they're not aware, then it's okay, but it can show that yes, you are coming with little research. So you can ask this type of question, or you can ask about their experience, that it's been like 5 years in the Deloitte you're working, so how it has been your experience. You can ask this type of question also, or you can ask that what work you will be getting to do that if you get selected. So this type of questions you can ask. Sahana, anything you'd like to ask? Anything which hasn't been answered? Sahana, Okay. you can unmute and ask the question. So she's asking how much percentage of final study should be completed before going for industrial training. I think answer would change. In your time here it would be different. Now it's different, but you can still. No. Hi, Yugantar. I am registered in old scheme itself. Okay, understood. Okay. Yeah, so I Can am answer also eligible for lesser number of leaves. Sure. So your attempt is in November 24? No, November 25. Okay, so you are in old Yeah. scheme itself. So it is not like a Yeah. percentage of final studies that you have to be completed with. It's like just try that like there are 6 subjects, so you are able to complete like 2-3 subjects at least, and at least FR to kar hi lo, because that is Okay. huge to do. And because industrial training get less leaves, so it's better that you are done with halfway of your syllabus. So it is something which is better. Okay, thank Or you. like FR and SFM, it is because this is because the questions that is asked in the interview are mostly from the FR and SFM, so it's better that we are done with these 2 subjects. Okay, so thanks a lot, everyone. Whatever documents we have discussed, whatever details we were talking about, all those I will be sharing on email, and wo sab mil jayega. And all the best to all of you for your, articleship interviews, whatever process there is. And whenever, if you get selected or if you get called for interviews, you do let us know. So we'll know that this session was helpful or not actually in getting your this. So thanks a lot, Riya, for your amazing insights into this entire process. Recording, you will get it on that same link. And it has not been uploaded. I will upload today's session also, yesterday's session also. From that same place, you're again unable to unmute. Can you try now? Yeah, done. So recordings, you will get it there. And the same link, you'll have the course curriculum section. There you will get the both the recordings. Okay, so thanks a lot, Riya. Anything you would like to, one Thank final you so much, tip to the everyone. participants? All the best. All the best, right? So I think that we'll just take that. Okay. So yeah, just nothing. Just give your best, guys, and you will all end up with something you all deserve to be. So just keep putting efforts. You will all end up with something really good. Thank you. Thanks a lot. Thank you, everyone. Bye-bye.